कैसे हो चैंपियंस। यहाँ हम देख रहे हैं बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश के दूसरे पेपर फिक्शन के एक और मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, तो कानपुर यूनिवर्सिटी के अंदर जो 25 को एग्जाम हो रहे हैं उसी के ऊपर हम 3 प्रैक्टिस से डिस्कस कर रहे थे और ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, अगर आप सी एस जी एम यू के अलावा किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हो फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। जैसा कि आप जानते ही हो, जब से एन ई पी लागू हुई है हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के साथ। हमने देखो हर क्वेश्चन को इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो समझने में उसमें आप समझ लीजिएगा, लेकिन लिखना इंग्लिश में है, इस बात को क्लियर रखना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन नैरेटिव टेक्निक, हाउ डज इट डिफर्स फ्रॉम नैरेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नैरेटिव टेक्निक रिफर टू द स्टाइलिसिस method an author used to tell a story such as point of view, narration style, imagery, and a stream of consciousness. Narrative structure, however, is the organized pattern of plot, including beginning, middle, end, and sequence of events. Technique focuses on how the story is told, while structure focuses on how the story is arranged. ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज एन इपोस्टोलरी नॉवल, गिव एग्जांपल। तो एन इपोस्टोलरी नॉवल इज रिटन थ्रू लेटर्स, डायरी एंट्रीज, ईमेल और पर्सनल डॉक्यूमेंट। दिस स्टाइल ऑफर intimacy and multiple perspective, making the narrative realistic and personal. It allows readers to see characters' inner thought directly. Examples include Samuel Richardson, Pamela and Crisia, Mercy Salis, Frank Lastin, and C.S. Lewis, The Screwtape Letters. ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की बातें करते हैं। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैंपस फिक्शन। तो कैंपस फिक्शन फोकसेस ऑन लाइफ within universities or colleges. It explores your culture, academic pressure, identity struggle, friendship, romance, and campus politics. This genre portrays the experiences, aspiration, and conflicts of students and teachers in education settings. Notable examples include The Secret History by Donna Tartt and Five Point Someone by Chetan Bhagat. चौथा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ माइथोलॉजिकल फिक्शन विथ एग्जांपल। तो माइथोलॉजिकल फिक्शन रिटेल्स एंशियंट myth, legend and driven stories in modern language and style. It gives traditional challenges new depth and contemporary relevance. The genre help reviving mythology for present day readers while maintaining cultural roots. Popular examples include Amisha Tripaঠি's Shiva trilogy, Chitra Divakarni's The Place of Illusion, and Rick Rodson Percy Jackson series. ठीक है, सेक्शन ए के पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज। तो द टाइटल द मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज हाईलाइट माइकल हैनार्ड्स राइज टू पावर एंड हिज tragic downfall within the town. It reflects how his choice, temperament, and past mistakes shape his fate. The title symbolizes theme of authority, responsibility, character, and destiny. It shows that Hazard's identity and life are deeply tied to Casterbridge. ठीक है, सेक्शन ए कंप्लीट होता है। सेक्शन बी की बातें करते हैं। पहला क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टराइजेशन इन फिक्शन। व्हाट टेक्निक डू नॉवलिस्ट यूज टू डेवलप कैरेक्टर्स। ठीक है, तो कैरेक्टराइजेशन इज इसेंशियल इन फिक्शन बिकॉज कैरेक्टर्स ड्राइव द प्लॉट, create emotional engagement, and reflect the theme of a narrative. Well-developed characters make a story believable and relatable. Novelists use several techniques to develop characters: direct description, dialogue, action, inner thought, interaction with others, and symbolic details.
They also employ round and flat psychological depth to reveal motives and conflict. Flashback, memories, and narrative perspective also help in shaping a character's background and personality. Through this method, readers understand a character's transformation, flaws, strength, and decision. Effective characterization ensure that readers connect deeply with the story and remember the character long after finishing the novel. ठीक है. अगले क्वेश्चन की बातें करते हैं. राइट एन एसे ऑन रीजनल नॉवल एंड डोमेस्टिक नॉवल एज अर्ली फ्रिक्शनल ट्रेंड. तो रीजनल नॉवल फोकसेस ऑन अ स्पेसिफिक geographical region, its customs, dialect, landscape, and social life. These novels aim to capture the culture and sense of a particular locality, making it central to the narrative. Early English fiction often used regional setting to portray rural life and community identity. Domestic novel, on the other hand, emphasizes family life, household relationship, and the emotional world of women. They explore themes like marriage, social expectations, morality, and personal growth within private spaces. Authors such as Jane Austen and the Bronte sisters contribute significantly to the domestic novel tradition. Together, regional and domestic novels shaped early fiction by blending social observation, emotional depth, and realistic portrayals of everyday life. ठीक है. अगले क्वेश्चन की बातें करते हैं. एग्जामिन द ट्रेंड ऑफ डिस्टोपिया स्पेस फिक्शन एंड चिट इन द कंटेम्पररी फिक्शन. तो dystopian fiction represent a future society marked by oppression, surveillance, environmental collapse, or loss of freedom. It reflects contemporary anxieties and critique political or technical systems. Space fiction explored interplanetary travel, extraterrestrial life, advanced technology, and cosmic conflict, combining scientific possibility with the imaginative exploration. Chick focuses on women's experiences, relationships, careers, and urban life, often presented with humor and emotional honesty. It addresses modern concerns such as independence, identity, and self discovery. These three trends show how contemporary fiction responds to social changes. Dystopia warns space fiction, imagining a future possibilities, and Chicklit highlight everyday struggle of modern women. Together, they expand the scope of storytelling and reflect evolving cultural realities. ठीक है. अगला क्वेश्चन. एनालाइज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लंदन एंड पेरिस इन अ टेल ऑफ टू सिटीज. तो in a tale of two cities, Dickens construct London and Paris to highlight stability versus chaos. London represents order, legal structure, and relative peace. Despite its social problem, it became a place of refuge for characters like the Manhattan's. Paris, however, symbolizes violence, revolution, and instability during the French Revolution. Dickens depicts Paris as emotionally charged, driven by anger and collective fury, embodied by characters like the Deafroges. The stake difference reflects the novel theme of resurrection, sacrifice, and historical upheaval. By the exposing the two cities, Dickens show how similar societies can thrive under political pressure and how human suffering manifests differently in a constructing environment. ठीक है. अगला क्वेश्चन. Hechard is the architect of his own misfortune, discussed with reference to the mayor of Casterbridge. So, in the mayor of Casterbridge,
His chart's downfall is largely the result of his own impulsive decision and flawed temperament. His greatest misfortune begins when he drunkenly sells his wife, an act that haunted him throughout life. His pride, jealousy, and inability to control emotion further worsen his relationship, especially with Ferris. Even with when give opportunities for redemption, Hedgehog's stubbornness prevent change. His refusal to adapt to new ideas lead to financial ruin and social isolation. Ultimately, his tragedy arises not from fate alone, but from his choices, weakness, and personal failures. Thus, Hitchard became the architect of his own suffering, illustrating hardy theme that human characters shapes destiny. ठीक है, पांचवा क्वेश्चन नहीं, पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेक्शन सी की बातें करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द मेजर थीम ऑफ सैक्रिफाइस लव एंड रेस्टिट्यूशन इन अ टेल ऑफ टू सिटीज। हाउ डू दिस थीम कंट्रीब्यूट टू द नॉवल एंड्यूरिंग अपीयर। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन ये रहा, एनालाइज जीन ऑस्टन प्राइड एंड प्रेजुडिस एज अ नॉवल ऑफ मैनर। हाउ डज ऑस्टन पोइट्री द सोशल कस्टम्स एंड क्लास डिस्टिंक्शंस ऑफ हर एरा। तो इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं किसी और क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।